Bismillahirrahmanirrahim. My name is Monik Qasim. Answer of one question number one. Identify the following dependent and independent variable in the below the given table. In the given table, the dependent variable y and dependent variable x1, x2, x3, or dependent variable HIV, DNA, blood, y dependent variable HIV co-culture blood, X1 HIV DNA rectal tissue, H2 HIV RNA rectal tissue, H3, or formula y is equal to F into X1, X2, X3. Y represent the HIV DNA blood dependent variable, X1 first independent variable represent HIV co-culture blood, and X2 represent the HIV DNA rectal tissue, the second variable. X3 represent the HIV RNA rectal tissue, the third independent variable. The study of the aim to explore the correlation structure between these variables, understand the how change in the independent variable x1, x2, x3 are associated with change in independent variable y, which is the HIV DNA blood in the level in the blood. Question number two: by using the below table, the relation between dependent variable and an independent variable, with independent variable for defines which kind of the relation. Answer question number two: the HIV DNA blood and HIV co-culture blood correlation coefficient 0.3604. Interpretation: there is a positive correlation 0.3604 between HIV DNA blood and HIV co-culture blood. These indicate the weak positive linear relation between these two variables. HIV DNA blood and HIV DNA rectal tissue correlation coefficient is 0.5321. Interpretation: there is a moderate positive correlation 0.5321 between HIV DNA blood and HIV DNA rectal tissue. This suggests moderate positive linear relationship between these two variables. HIV DNA blood and HIV RNA rectal tissue correlation coefficient 0.2023. Interpretation: there is a weak positive correlation 0.2023 between HIV DNA blood and HIV rectal tissue RNA rectal tissue. This indicates a weak positive linear relation between these two variables. HIV culture blood and HIV DNA rectal tissue correlation coefficient 0.3026. Interpretation: there is a weak positive correlation 0.3026 between HIV co-culture blood and HIV DNA rectal tissue. This suggests weak positive linear relation between these two variables. HIV co-culture blood and HIV RNA rectal tissue correlation 0.6741. Interpretation: there is a strong positive correlation between HIV co-culture blood and HIV RNA rectal tissue. This indicates a strong positive linear relationship between these two variables. DNA, HIV DNA rectal tissue and HIV RNA tissue correlation coefficient 0.4295. The interpretation: there is a moderate positive correlation 0.4295 between HIV DNA rectal tissue and HIV RNA rectal tissue. This suggests a moderate positive linear relation between these two variables. These correlation coefficients provide the insight into the direction and strength of linear relationship between the variable. Keep in the mind the correlation does not imply causation and other type of the relationship, and non-linear causal may not be capture this coefficient. Question number three: define the below the regression statistics table in the detail. Answer this: the regression statistics table provides the key information about the performance and the characteristics of the regression model in the context of the value you provide. Definition of the R scale is a statistical measure that represents the proportion of the variance in the dependent variable, where the variable being predict and explained by explained that is the explained by the independent variable in the model. Interpretation: in this case R square value is 0.3702 और percentage में 37.02%. This means that approximately 37.02 of the variable in the dependent variable is explained by the independent variable.
included in the regression model. A higher RSK value indicate the better fit of the model to the data. Observation definition, then this number of the observation or data point in the data set used for the regression analysis interpretation. In this case, there is a 40 observation, meaning that the analysis is based on the data set consists of 40 data point. These two statistical offer us glimpse into the goodness of fit regression model, while R-square provide indicate how well independent variable explain the variability in the dependent variable. The number of the observation reflect the size of the data set used for the analysis. It is important to consider the value when assessing the reliability and relevance the regression result. Question number 4, is the model significant discussed in detail by using the below table. Answer. The table you provide is an ANOVA analysis of variance table. Can be used assess the overall significant the regression model. Let's break down the key component. ANOVA table, the regression DF represent the degree of the freedom is 3, and assess the sum of the sequence 61889.84553, or MS mean square is value is 20630.61518, or F is a statics. F statics 7.055, or statics F is 0.0007227007 is the p value. रेजिड्यू एरर रेजिड्यू एरर, अब इसके अंदर डी एफ की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 36 है, और एस एस एम सम ऑफ स्केयर 1052.73.1295 है, और एम एस मीन स्केयर है इसकी जो वैल्यू है 2924.423596 है, और टोटल जो सा आपका बनेगा टोटल डी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 39 बनेगा, और एस एस सम ऑफ स्केयर जो सा 164.975. इंटरप्रिटेशन की ये है कि टेबल हेल्प असेस द वेदर द ओवरऑल रिग्रेशन मॉडल इज स्टैटिकली सिग्निफिकेंट. अब रिग्रेसिव सेक्शन के अंदर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे 3 है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द मॉडल, सम ऑफ द स्केयर जिसको हम कहते हैं जो एस एस 69,891.845 वेरिएबल एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन मॉडल. मीन स्केयर जो इसका होगा जिसको एम एस कहते हैं 20630.61518 एवरेज वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब इसके अंदर एफ जो एफ है वो एफ स्टैटिक्स है, इसकी जो वैल्यू है 7.055, द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन बाय द वेरिएबल अनएक्सप्लेन वेरिएंस. और स्टैटिक्स एफ जिसको पी वैल्यू कहते हैं इसकी वैल्यू है 0.000752707. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द एंड एफ स्टैटिक्स एक्सट्रीम एट द ऑन वन कंप्यूटेड इफ वन हाइपोथेसिस वर ट्रू. अब रेजिड्यू सेक्शन के अंदर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखेंगे जिसको डीएफ कहते हैं 36, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ द पैरामीटर एस्टिमेटेड ऑफ द मॉडल, सम ऑफ द स्केयर इसको एसएस कहते हैं 105273.1295 अनएक्सप्लेन. मीन ऑफ स्केयर एमएस जिसको हम कहते हैं 29 24 25 35 29 24.25 35 96 एवरेज अनएक्सप्लेन वेरिएबिलिटी ऑफ ईच डिग्री फ्रीडम. टोटल अब इसका बनेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एफ 39 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये. सम ऑफ स्केयर्स का बनेगा जिसको एसएस कहते हैं 167 164.975 टोटल वेरिएबिलिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब इसका नतीजा क्या निकला है, इसका कंक्लूजन ये है द रिग्रेशन मॉडल इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इफ द पी वैल्यू सिग्निफिकेंट इज लेस देन द चूजन सिग्निफिकेंट लेवल, कॉमनली इनको इस्तेमाल करते हैं 0.05. In this case, p value is 0.000757707, which is the less than 0.25. इस वजह से हम इसको कहेंगे ये statistically significant है. और f statistics of 7.055 indicate that the variance explained by the model is significantly greater than the unexplained variance. Summary इसकी ये है कि based on the provided ANOVA table, the regression model is considered significant. The p-value is less than typically significant level of 0.05. Question number 5 है कि table of the given below the model summary coefficient define the multiple linear regression model in the table. अब इसका आंसर ये है
The multiple linear regression model based upon the coefficient provide the table on table can be expressed as a follow. इसमें y जो सा वो b नॉट b1 x1 b2 x2 प्लस b3 x3, इसमें जो y है वो प्रेडिक्ट करता है वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल, b नॉट इज द इंटरसेप्ट होता है, हमें पता है b1 इज द कोफिशिएंट कोफिशिएंट है वेरिएबल HIV को कल्चर ब्लड x1 वेरिएबल, b2 कोफिशिएंट द variable HIV DNA erector tissue X2 variable, B3 is the coefficient of variable HIV erector tissue X3 variable, X1 X2 X3 the value of the independent variable, ये तीनों independent variable है. Using the value of table, हम टेबल के अंदर वैल्यू उसकी इंपुट करेंगे तो फिर हमें द कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द एस्टिमेट चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ वन यूनिट चेंज इन द कोरस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल होल्डिंग और वेरिएबल कांस्टेंट. The table also provide additional information about the standard error, the T star and P value each coefficient. Standard error क्या होता है? Standard error it means the variability estimate coefficient smaller standard error indicate the more precise estimate. इसी तरह टी स्टार क्या होता है? टी स्टार टी स्टैटिक इट इज अ रेशियो ऑफ द एस्टिमेट कोफिशिएंट इट इज और स्टैंडर्ड एरर इट हेल्प assess the significance of the corresponding value. P value क्या है? हमें पता है P value क्या है, तो उसको हम it indicate the probability of observation T star T static extreme as one of computed assuming the null hypothesis that is corresponding coefficient is 0. For example, P value chosen significant level commonly 0.05 suggests that the corresponding coefficient is statistically significant. There is a using the providing coefficient multiple linear regression model can be written as below. अब हमने वही वैल्यू जो थी हमने पुट की, तो अब हमने वैल्यू पुट कर दी है उसके अंदर जो हमारे पास बी नॉट की थी यानी इंटरसेप्ट की थी, और बी वन की थी, B2 की थी, B3 की थी. ऊपर हमने जो टेबल के अंदर डिस्कस किया है जिसको β1 β2 या β3 भी कहते हैं. खैर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं. प्रिडिक्ट द HIV DNA ब्लड इफ द कोफिशिएंट कल्चर ब्लड 1/2 है, HIV को कल्चर ब्लड जो सा 160 है, एंड HIV RNA इरेक्टर टिश्यू 82 है. इसमें जो प्रोडक्ट है HIV DNA ब्लड बेस्ड ऑन द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वी कैन यूज द कोफिशिएंट प्रोवाइडेड एज अ टेबल. अब हमने जो वैल्यू हमें दी हुई है इसको हम टेबल के अंदर पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास जो सा वो जो y है, जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू आएगी 115.68613604. फिर हम इसको कह सकेंगे देयर फिर द प्रोडक्ट वैल्यू HIV DNA ब्लड बेस्ड ऑन द गिवन वैल्यू को कल्चर ब्लड HIV को कल्चर ब्लड एंड HIV RNA इरेक्टर टिश्यू इज अप्रोक्सीमेटली 115.69. थैंक यू सो मच सर.